हे एवरीवन, इट्स मी प्रिया और आज मैं आपको बताऊंगी स्मूथ शेडिंग कैसे करें। ओके, सो उसके लिए आपको शेडिंग करने के लिए एक मेकअप ब्रश की ज़रूरत है जो कुछ इस तरीके का दिखे। और मैं बहुत टाइम के बाद एक आर्ट लाइन की पेंसिल्स का यूज़ करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो। सो यस, एंड आपको ऐसे पेंसिल्स को अपने शार्प कर लेना होगा क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं इजीली शेड करने में। ओके, सो मैं पहले HB पेंसिल लेती हूँ। ओके, एंड देन मैं इसे फर्स्ट लेयर शेड की। आफ्टर दैट आई यूज़ दिस मेकअप ब्रश to blend it, and then I use this pencil once again, and then I blend it once again, and after some process like 5 to 6 times I use 2B, and then I got this result. And for that आपको बार बार ब्रश का यूज़ करते रहना होगा, और जब तक आपको स्मूथ टेक्सचर नहीं मिल जाता तब तक आपको ब्रश से ब्लेंडिंग करते रहना होगा। और हाँ, आप एक बात का ख्याल रखें कि जो पेपर स्टम्प है, अगर आप इसे यूज़ भी कर रहे हो तो ये डर्टी ना हो, एकदम ही क्लीन हो, और तभी आप इसका इस्तेमाल करें, वरना ये पेपर में पैचेस दे देता है और वो इजीली जाती नहीं है, पूरी रेज करनी पड़ती है। एंड देन पूरी रेज करने के बाद ऑलमोस्ट आधा हमारा स्केच ख़राब हो जाता है। सो और मैं ये हेयर पे हाईलाइट्स के कारण अच्छे से रिजल्ट्स वीडियो पे नहीं दिखी, बट यू कैन सी नाउ द हेयर्स। Okay, I have drawn the realistic hairs, and also I have uploaded a video on how to draw a realistic hair. Okay, so you can check it out. It must be you will like it. And yes, in eyelid and eyelashes I use charcoal pencil of Camlin medium shade. Okay, and I use here maybe 10B pencil. Okay, on lips and tongue. So yeah, let's see and enjoy this video. Turn it on.
about to turn it on. We about to turn it on.